Okay, so over here you can see the syllabus, bacho, that chemical energetics, the chapter sayings 5.1 is state that an exothermic reaction transfer thermal energy to the surrounding and leading to an increase in the temperature of the surrounding. We talk about that, right? Exothermic reaction जो होते हैं वो thermal energy release करते हैं surrounding में. We talk about that, and due to this आपके पास जो temperature होता है ये क्या होता है, increase होता है. ठीक है. Then state that endothermic reaction इसका उल्टा है, बिल्कुल वो energy absorb करते हैं surrounding से और आपके पास temperature जो है decrease होता है. ठीक है. Then state that the transfer of thermal energy during the reaction is called enthalpy change. We talk about that. जो energy difference होता है वो आपके पास enthalpy change कराता है. ठीक है. और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नेगेटिव और एंड के लिए पॉजिटिव होता है, राइट. देन एक्टिवेशन एनर्जी की बात हमने की, दैट इज द एनर्जी व्हिच रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन. ठीक है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वी टॉक अबाउट दैट. और फिर हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई. देन स्टेट दैट बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड मेकिंग इज एक्सो, वी टॉक अबाउट दैट. एंड आल्सो वी कैलकुलेट enthalpy changes as well according to bond energies. So according to the syllabus we have completed this. Am I right, bacho, or not? Yes, everyone. Okay, so let's move on then. These are the notes. सर मैंने एक चीज पूछनी थी सर. मैं आज पास्ट पेपर कर रहा था तो उसके अंदर एक दो सवाल थे वो मुझे नहीं आ रहे थे एनर्जी के. मैं आपको एक सवाल भेजे तो आप वो करके दिखा सकते हैं. कौन से सवाल थे? मैं पिक्चर भेज देता हूँ ना आपको, आप वो करके दिखा सकते हैं. जी जी, आप आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम है, आप वैसे भी भेज सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप जो है ना अभी सवाल पूछें और फिर अभी भेजें. आप वैसे भी नॉर्मली आप किसी भी वक्त भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करा के आपको दिखा दूंगा. दैट्स नॉट अ बिग डील, राइट. चलें स्टार्ट कर दें. और आप सबके जितने भी कोई भी कंसर्न्स हो आप लोग मुझे भेज सकते हैं, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे. फिलहाल मेरे पास जितने पास पेपर्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं. राइट नाउ यू कैन सी दिस इन द क्वेश्चन नंबर 1. इट इज सेइंग दैट the diagram shows an energy profile diagram for the chemical reaction both with and without catalyst, right? Which energy change is the activation energy for the catalyzed reaction? We know that activation energy is actually from the reactant to the highest peak, right? And right now A and B are activation energies. They are from reactant to the highest peak, right? Now the thing is, which one is actually showing the catalyzed reaction? We know that. What is catalyzed reaction? It is what it is show you the decrement in the activation energy. So what is the right answer, bacho? B for ball. B for ball is the right answer. You can see this. B is actually showing you the catalyzed reaction in which the activation energy is little bit lesser, right? Yes sir. So the right answer will be B for ball. ठीक है बच्चों. Then which change is endothermic? We know that endothermic is bond breaking. So which one is showing you the bond breaking over here out of these four options? You can see this, that over here bond breaking and bond making both are over here working. Over here you can see this, these two atoms combine together to make a molecule. So this is bond making and this is bond breaking, right? Molecule is distributing its atoms into individual atoms, and whenever atom is going to be formed, you can say that this is a bond breaking mechanism. So this is the right answer, C, right bacho? Chale, who is gonna tell me the MCQ number? So over here MCQ number 3 is saying that it is A. Very good answer from your side, bete. So it is actually highest peak say reactant का difference. So it is always activation energy. So the A will be the right answer. Very good. What about fourth one? कौन बता सकता है मुझे the fourth one? I think again I think say this. A है. सर मेरे ख्याल से B है. Just look at over here, everyone just look at over here. Whenever you talk about solid, liquid and gases, we know that solid melts
to form liquids, and for this we need to provide energy, right? So this is endothermic reaction. So whenever you are going to melt, whenever you're going to talk about melting, so definitely it absorbs energy. So this is endothermic. And the backward one, which is freezing, is exo, right? And then same as it is. If you convert liquid into gaseous state, it is evaporation. For this, you need to provide energy. So this is endothermic reaction. And the backward, which is condensation, is exo, right? Same as it is. If you are converting solid into gaseous state, it is sublimation, and you need to provide energy for this. So this is what, bacho? This is endothermic, and the backward is solidification, which is exothermic. So according to this information, you can see this freezing is the backward reaction, and condensation is also the backward reaction. So this is both, you can say that these are both exothermic. Keep it. सिर्फ जिस तरह आपने लिखवाया था कि दोनों में टेम्परेचर राइज होता है, तो सर इस लिहाज से तो बी नहीं बनता, एक्सोथर्मिक इन द लाइक टेम्परेचर राइज होता है. टेम्परेचर राइज होता है एवोपरेशन में, देखो वो प्रोसेस की वजह से होता है, ठीक है ना? अगर फॉर सपोज आप किसी को हीट कर रहे हो, किसी चीज को आप हीट कर रहे हो, तो टेम्परेचर तो उसमें भी राइज होगा ना, ठीक है ना? ओवरऑल प्रोसेस की बात कर रहे हैं. आपको बताया मैंने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक एक साथ होते हैं दोनों, ठीक है ना? जिसका इफेक्ट ज्यादा होता है, जिसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, वो ओवरऑल रिएक्शन होता है. तो काम तो दोनों एक साथ हो रहे होंगे, ठीक है ना? अब देखें, फॉर सपोज अगर समंदर पर एवोपरेशन हो रही है, वहां बारिश के जो बारिश का प्रोसेस है पूरा, वी नो दैट समंदर से पानी एवोपरेट होकर बादलों में जमा होता है, तो द सेम प्रोसेस द एवोपरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सी. सो वहां पर आप बताएं कि टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आता है? नहीं नजर आता. एवोपरेशन इज एक्चुअली व्हाट? एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो टेम्परेचर हर जगह इफेक्ट नहीं करेगा. जस्ट लुक एट ओवर हियर, फ्रीजिंग, this is the backward reaction, which is freezing, right? And this is the backward reaction, which is condensation. So they both are exo, right? Okay. Okay, now what about MCQ number 5? This is all about what you're thinking, nothing else. इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि ऐसी हो जैसे आपने सिलेबस में पढ़ी हो, याद करनी हो, स्किल्स हो आपकी, ऐसा कुछ नहीं है. इसमें कोई लर्निंग स्किल नहीं है. It is all about your thinking. कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? Just look at over here. Methane, when combusting, it is producing 890 kilojoules per mole energy. अब इसके बाद जो होगा इथेन, उसके अंदर 2 कार्बन होंगे, ठीक है ना, 2 कार्बन, उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी. फिर इसके बाद जो होगा उसके अंदर होगा 3 कार्बन, विच इज नोन एज प्रोपेन, वो थोड़ी सी और ज्यादा एनर्जी रखेगा. उसके बाद है 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, राइट? इसकी एनर्जी आपको गिवन है. देन ब्यूटेन के बाद होगा पेंटेन, उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी. फिर आपके पास 8 कार्बन वाला ऑक्टेन. Now just look at over here in the answers. They are saying 2 answers over here, 2200 and 1500. तो आप मुझे बताएं, मीथेन के बाद we have 2 more molecules. एक के अंदर 2 कार्बन है, एक के अंदर 3 कार्बन है. जिसके अंदर 2 कार्बन होंगे वो मीथेन से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और जिसके अंदर 3 कार्बन होंगे वो उससे भी ज्यादा होगा. तो बताएं इसमें से 2 कार्बन वाला और 3 कार्बन वाला कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 3 कार्बन वाला कौन सी एनर्जी होगी? 22 और 1500? सर 22. यस, दैट शुड बी 22. देखें 890 से ज्यादा क्या है आपके पास? 1560, और उससे ज्यादा है आपके पास 22. तो डेफिनेटली अगर ये 1 कार्बन के लिए है तो ये 2 कार्बन के लिए होगी, और ये 3 कार्बन के लिए होगी. दैट्स राइट ना? सो द राइट आंसर मे बी ए और बी, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है. देन आफ्टर दैट you can see this, ये 4 कार्बन की है, ये 4 कार्बन की एनर्जी है. तो 5 कार्बन की कितनी होगी? 42 होगी या 35 होगी? 35. 35. So the right answer will be B. So it's all about your thinking. उसमें कुछ ऐसा नहीं करना. यहाँ पर MCQs है, इसमें कुछ आपकी कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही, आपकी लर्निंग स्किल्स कोई सी भी एनर्जी आपकी नहीं यूज हो रही. यहाँ ऑल अबाउट योर थिंकिंग, आप कितना सोच सकते हैं. ठीक है भाई? Let's talk about MCQ number 6. Which change in condition increase the energy of the particles in the reaction? कौन सा change particles की energy को बढ़ाता है? बताइए. Anyone? Sir D. Sorry, C. We know that whenever we increase the temperature, the energy of the particle increases. So the right answer will be C. Increase in temperature can only increase
increase in temperature can only increase the energy of the particles. Catalyst add करने से आपके पास क्या होता है? Catalyst add करने से आपके पास रिएक्शन तेज हो जाता है। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, स्पीड अप होता है रिएक्शन, तो इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन, एनर्जी नहीं होती, ठीक है ना? सो दिस इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर। हम गलती से शायद इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन को समझकर कैटलिस्ट पर निशान लगा सकते हैं। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर, एनर्जी जो पार्टिकल्स की होती है वो सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करता है और कैटलिस्ट स्पीड्स ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। दैट इज राइट बच्चों और नॉट? नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7। अब देखें, इस एमसीक्यू में कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा एमसीक्यू है, बट हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि उसने जो डॉटेड लाइन दी है, इस डॉटेड लाइन से आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है ना? व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, दे आर आस्किंग फॉर एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज फॉर द catalyzed रिएक्शन। वी नो दैट if we are adding catalyst or not, there is no effect on enthalpy change. And what is enthalpy change? It is the energy difference between reactant and product, right? So you can see this is the reaction and this is the product, right? So the difference is of 50. The difference is of 50, and we know that the arrow is downward, so it is showing you that product is downward, the arrow is downward, it is showing you that the reaction is exo, and the downward arrow shows the negative change. So the right answer will be bacho B. Is that clear or not? Yes sir. Okay, then what about MCQ number 8? Yes, any one of you, can you solve this? Sir, A. A. So they are B. saying that bond breaking is an endothermic process and bond making is exothermic, for which change is it's not possible to form from the equation. So deduce whether the reaction is endo or exo. Yes, you can see this. It is bond breaking. So bond breaking is endo. We can find out this, right? This is what bond breaking. It is endo. We can find out this. This is bond making. This is exo. We can find out this. But in answer B, we cannot find out that this is exo or endo because both the cases are here. Yeah, bond making bhi ho rahi hai, bond breaking bhi ho rahi hai. So we are not going to find out by the equation कि यार ये endo या exo. अगर हमें find out करना है तो for this we must need to have bond energy, है ना? हमें calculate करना पड़ेगा, right बच्चों or not? So the right answer will be B. B के अंदर it's difficult for us without bond energies to identify कि ये exo है या endo है, right? Because both the things are going to be happen over there. Now MCQ number 9, the diagram shows the energy profile of a chemical reaction to two energy changes are labeled X and Y. Which statement about the reaction is correct? Activation energy of the reaction is XY. Is that right or not? They are saying activation energy X plus Y है. Yes. Activation energy reactant से Okay. highest peak होती है. जी जी So it is नहीं only X, not X plus Y. Then enthalpy change for the reaction is X. Enthalpy change reactant और Sir. product का difference होता है. It is not X. It is Y. It is also wrong. The enthalpy change of the reaction is X plus Y. It is also wrong. The reaction is exothermic is Yes, right sir. because the product is downward. So D will be the right answer. Right or not? Yes, sir. सर Okay. ये ए करेक्ट क्यों नहीं है? A करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ X है ना आपके पास, ओह अच्छा ठीक है? Which of these process are both endothermic? अब इनमें से कौन से दोनों एंडोथर्मिक हैं? कंबशन, कंबशन एक्सो या एंडो है बच्चों? Sir, endo. नो, कंबशन में Sir, आप आग exo. लगाते हैं, आप आग लगाकर एनर्जी हासिल करते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब फोटोसिंथेसिस दोनों में है एंड क्रैकिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस in which you are breaking down the substances by heating. So C will be the right answer. C will be the right answer. Is that clear everyone? सर फर्मेंटेशन क्या होता है? Fermentation is a process in which you are going to form substances like alcohol and carboxylic acid
this is the organic process, right? We need to learn this in organic chemistry, right? Okay, the equation shows the reaction for the manufacturing of ammonia which change will decrease the activation energy. बच्चों इंतहा का आसान सवाल है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा? Addition of catalyst. Addition of catalyst is going to decrease what? Activation energy. Perfect. Yes, the formation of liquid water from hydrogen and oxygen is thought to occur in 3 stages. Yes, anyone want to ask anything? These are 3 reactions over here. You can see this hydrogen is combusting in the presence of oxygen to produce. No, it is actually breaking down. This is bond breaking. So bond breaking is actually endo. This is bond making. So this is exo. And this is what? Gas to liquid. Gas to liquid. Liquid is condensation. So this is exo. Right. So which 2 or which stages would be exothermic? But so what is the right answer? D. D for doll, right? D is the right answer for this. Very good. Now, any one of you, can you please answer for this question? MCQ number 13. Any one of you, MCQ number 13 का आंसर कौन दे सकता है? Sir Sir, A. 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 चले बाकी सब भी देख लें. Is that A or not? सिर्फ ये तो लिखा नहीं रिएक्टेंट कौन सा प्रोडक्ट कौन सा है. उससे क्या फर्क पड़ता है? रिएक्टेंट हमेशा पहले ही होता है, प्रोडक्ट हमेशा बाद में होता है. नीचे लिखा हुआ है रिएक्शन पाथवे. इट शोज यू कि रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड वाला होगा. यस सिर्फ यही होगा इसका. A I answer. think so A होगा. Right. Okay. Sir, A. Okay. Okay, that's fine. That's fine. Very good, every one of you. Let's see is that A or not. So the reaction is saying that the reaction is endothermic because it is positive. So definitely या तो A हो सकता है या तो B हो सकता है. C और D आंसर नहीं हो सकते हैं because उन दोनों का प्रोडक्ट नीचे है तो वो आंसर हो ही नहीं सकता है. दूसरा ये कि whenever you talk about endothermic reactions, so both of the arrows, the head of the arrows should be upward because enthalpy is also positive and activation energy is always positive. The right answer will be A. That's absolutely fine, every one of you. Good job. Then question number 14. Can you answer this? Any one of you? That's something related to slightly with moles. 132. 132. Okay, anyone else? Sir, wait please. C. C. Yes, C will be the right answer. Why? C will be the right answer because you need to see over here, 1 mole of nitrogen is reacting actually with 2 moles of oxygen, right? If you are increasing 2 moles of nitrogen and the moles of oxygen are still 2, so there is no use of increasing nitrogen molecules because there is no more oxygen to react with nitrogen. जब तक आप ऑक्सीजन को नहीं बढ़ाओगे, नाइट्रोजन को आप जितना भी बढ़ा लो रिएक्शन तो होगा ही नहीं बिकॉज आपके पास ऑक्सीजन जितनी है वो मैक्सिमम एक ही मोल के साथ रिएक्ट कर सकती है ना. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इज सेइंग कि 1 nitrogen molecule can react with 2 oxygen molecules. So if you have 1 mole of nitrogen and 2 moles of oxygen, that's fine. It is the maximum reaction. इसके अलावा नहीं हो सकता. अब आप नाइट्रोजन के 100 मोल्स क्यों ना रखते हैं, there is no use of these molecules because आप ऑक्सीजन जब तक नहीं बढ़ाओगे रिएक्शन नहीं बढ़ेगा. तो रिएक्शन तो उतना ही है, जब रिएक्शन उतना ही है तो एनर्जी आपके पास उतनी ही रहेगी. एब्सोल्युटली परफेक्ट. गुड जॉब बॉय. यस. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 15. इसका आंसर मुझे कौन बता सकता है? एक्चुअली इन द लेक्चर आई टोल्ड यू द आंसर ऑफ दिस, सो आई थिंक यू कैन आंसर दिस. यस, क्विकली. Sir, B. B for ball. Yes sir. Absolutely Yes, right. Absolutely right. Because you can see this, they are saying effect of catalyst. We know that by adding catalyst, the activation energy is definitely going to decrease, but there is no change on enthalpy. I told you in the lecture, and that's absolutely perfect. Your answer. Activation energy decrease, but enthalpy is unchanged. Good job. Yes. Question number 16. Yes. कौन जवाब देगा इसका? I know that you all know this.
16 and 17 both. Abir, can you answer this? Sir, can I? Yes, please. Sir, D. D for doll, right? So let's see, is that right or not? D for doll is saying, the reaction is saying that the reaction is exothermic. Which rock correctly shows? You need to see, you need to read the MCQ completely first of all. Which rock correctly shows both the sign of activation energy and the type of enthalpy change for the reverse reaction? Reverse reaction is important over here. So this is actually exothermic reaction, but the reverse reaction should be endothermic. So the activation energy is positive and the reverse reaction is endothermic. So the right answer will be C. Is that clear, bacho, or not? Yes, sir. This is the thing that you need to keep remember for this MCQ. Even sometimes a single word can completely change the answer, right? So this is actually the case. वैसे देखने में एक्सोथर्मिक लग रहा है, but इसका जो backward होगा definitely endo होगा. चलें, ये MCQ अभी हमने start में किया. We know that it is a catalyzed reaction B. So let's talk about MCQ number 18. How does a catalyst increase the speed of reaction? Easy peasy. कौन बताएगा इसका आंसर? Sir, D. B. इसका आंसर होगा by lowering the activation energy. D will be the right answer. Very good. Yes, the combustion of methane is exothermic. The equation is given below. What can be deduced from the fact that the reaction is exothermic? बताएं इसका आंसर. B. We also did this. क्या आंसर होगा इसका? A, sir. B. B. B for ball. Yeah. Okay, but you need to keep remember बच्चों, ये इस तरह के MCQs के लिए आपको पहले तो अपना दिमाग बिल्कुल क्लियर कर लेना है. ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो कि number of bonds are not going to decide the exothermic and endothermic part of the reaction, right? It's all about bond energy. कभी कभार एक छोटा सा बॉन्ड हो सकता है वो 10 बॉन्ड हो आपके पास, लेकिन एक ही बॉन्ड जो कि सिंगल बॉन्ड हो उसकी एनर्जी 10 बॉन्ड के बराबर भी हो सकती है, राइट? It is all about bond energies कि कितना strongly एक दूसरे को attract करते हैं. So you need to keep remember that the number of bonds are not going to decide the enthalpy change or the overall behavior of the reaction. So A और B तो आंसर हो ही नहीं सकते. More or less की कहानी नहीं है. बॉन्ड ज्यादा टूटते हैं, ज्यादा बनते हैं. These are not the things going to decide कि आपके पास एक्सो है या एंडो है. पहला दो आंसर तो नहीं हो सकते, ठीक है ना? और अच्छा हुआ आप लोगों ने ये गलती कर दी ताकि मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पर कि number of bonds are not going to decide the behavior of the reaction, right? It's all about the bond energies. So you can see this bond broken. Bond जो टूटते हैं, it is the endothermic part are stronger. अगर वो stronger होते तो reaction endothermic होता. Bonds form, अगर जो bonds form हो रहे हैं वो exothermic part होता है. अगर वो stronger है, that means the overall reaction is exothermic. Is that right or not, बच्चों? Yes, Is that sir. clear, बच्चों? This is a very important MCQ. You need to keep remember this because number of bonds को हम समझते हैं कि वही एक्सो और एंडो डिफाइन करेगा, नहीं. This is all about bond energies. Now ये MCQ moles से related है. So for this you need to find out the number of moles first. So over here we know that the moles का formula is actually concentration into volume over 1000. अगर volume आपके पास centimeter cube में है, so right now concentration is 1 and the volume is 100 divided by 1000, so it will give you 0.1 mole per decimeter cube concentration. So you can see this, the enthalpy change is saying that the energy release when 1 mole is going to be reacted. 54 kilojoules energy release होगी अगर per mole, यहाँ लिखा हुआ है क्या per mole, यानी कि एक मोल अगर रिएक्ट करेगा, so it will be 54. So you can say that if 1 mole is reacting, then 54 kilojoules energy is releasing. So if there will be 0.1 mole, so what will be the answer? It will be 5.40 kilojoule. Yes, it will be 5.4 kilojoules energy. Is that right, every one of you? Yes, sir. Next, 23.
If you talk about MCQ number 23, तो अब इसका आंसर देंगे आप लोग 23 और 24 आप लोग करें जल्दी से। Sir, I B, think sir. 23 C. C. 23 का आपके पास क्या होगा? C. C. So this is actually exothermic reaction, that is completely fine, and the sign is actually negative. Enthalpy change का negative sign होता है, क्या बात है? This is C. Right, अब देखें कोई सा भी MCQ आप लोग सॉल्व करते हो तो उसमें आपके पास दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेइंग दैट प्रोडक्ट नीचे है तो एक्सोथर्मिक, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो दो MCQs के दो ऑप्शंस कट गए MCQs के ना, तो हमारे लिए आसान हो गया। अब इवन आप तो कब भी मारोगे तो 50% आपका तुक्का लगने के चांसेस हैं। सो कॉन्सेप्ट पहले देख लो उसके अंदर वो क्या बोल रहा है। दूसरी चीज वो एंथैल्पी चेंज की बात कर रही है, यू नो दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो एंथैल्पी नेगेटिव होती है। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट दिस इज द राइट रिएक्शन or this is the right option, sorry. So this is the way to answer out the MCQs. चलें इसमें इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। Sir, B. D, B sir. for balls. Yes. 24 Okay, so you can see this. The diagram shows the reaction pathway for the given reaction without use of a catalyst, right? Which information correctly describes the effect of catalyst on the activation energy and enthalpy change? We know that if we use catalyst, so it will decrease the activation energy. So the maybe the right answer will be A or D, any one of them, right? And D. these two are completely wrong. D. And we know that second option is there is no effect on the enthalpy change. So the right answer will be बच्चों D. Is that clear? Yes, sir. Next, चलिए यहाँ आ जाते हैं 25 और 26। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो? ट्राई करो। जी C. C, the reactant has a higher energy content than the product. Definitely isothermic reaction होगा तो उसमें reactants की energy product से ज्यादा होती है। Absolutely perfect. Good job. देखने में ये MCQ बहुत मुश्किल लगता है, but ये वाला बहुत easy है, बहुत easy. That's very good. And what Sir? about जी? सर हम ये कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक में सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। You can say that. Why not? ओके सर। चलें 26 करके बताएं जल्दी से। सर आई थिंक सो ये सी होगा। Yes, again, it is saying that Yes. the diagram shows the Sir, reaction C होगा, pathway for the reaction without catalyst. ये without catalyst है. Which diagram shows the addition of catalyst, which speeds up the reaction? So this is exo. You need to keep remember. So the A can be the right answer, C can be the right answer, but definitely B and D not. Right in the end of it. And we know that when you add catalyst, so the activation energy is like going to be decreased. So the right answer will be C. Absolutely right, bachcho. Good job. 27. C, sir. Which of the following reaction is an endothermic reaction? The oxidation of carbon to carbon dioxide. No, it is actually combustion. Endothermic. Endothermic में आप कह सकते हैं the formation of carbohydrate and oxygen from carbon dioxide and water. This is actually photosynthesis. So this is one of the endothermic reaction. सिंपल आप इसको बना के देख लें। इथेनॉल तो कंबस्ट हो रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी आपके पास जो है कंबस्शन होगा तो ये भी नहीं हो सकता। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट इज आल्सो कंबस्शन, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 28, 29, 30, 31 and 32. Now this is your test.
You need to answer all these 5 MCQs and let's check आप इसमें से कितने सही कर सकते हो. So you can see these MCQs, बच्चों. Many of you complete this very well. So the equation below shows the exothermic reaction. So whenever you talk about exothermic reaction, definitely the energy of the product is greater than the reactant is the wrong statement, because whenever you talk about exothermic reaction, it is like this. So you can see this product is lesser and the reactant is higher. So they are talking about the incorrect statement. So definitely the D is the wrong answer, right? And when they talk about the energy release, so energy release is actually what? Bond making. It is exothermic reaction. So definitely bond making is exo, so it will release energy. So formation of hydrogen molecule by hydrogen atom is exothermic reaction, right? Then they are saying the energy profile diagram for the reaction sodium hydroxide and hydrochloric acid. It's a neutralization reaction. In the neutralization reaction, we don't need activation energy. It is a very good reaction. Without activation energy, it can start. So they are saying what can be deduced from the diagram. So you can see that the product contains less energy than reactant. That's obvious from the diagram. It is having less energy and it is having greater energy. So it is showing you in the diagram that the B is the correct answer. Then it is again exothermic reaction. So they are asking for exothermic reaction. We know that exothermic is bond making and endo is bond breaking. So they are saying energy needed to break the bond is lesser, right? Energy needed to break the bond is less, right? Over here it is lesser, it is greater. So definitely agar lesser hogi to release zyada hogi to exothermic, right? And then which of the following change is endothermic? Endothermic is bond breaking. So over here the bond breaking is B. Is that clear, every one of you? Yes. Yes, sir. चलें तो देख लेते हैं अभी और कितने MCQs बाकी हैं. अभी तो और बहुत सारे बाकी हैं. चलें वो हमारे टेस्ट में काम आएंगे. हम इसको 35 तक कंप्लीट कर लेते हैं. And then tomorrow will be the test of this. All right. Yes. So the diagram shows the energy profile diagram of the reaction. What is the correct description of the reaction? It is endothermic reaction. So these two can be correct, right? This is wrong. This is wrong. Activation and enthalpy both are positive. So the B will be the right answer. Then they are saying the reaction energy profile diagram shows the reaction and which statement is correct. Which statement is correct? By the way, it is the highest place, and this is what? The reactant side. So H3 minus H1 will be the activation energy. That is the right answer, right? The formation of hydrogen iodide from hydrogen and iodine is an endothermic reaction. Endothermic reaction. What may be deduced from this information? So again, the number of bonds is not the right answer, and this is also absorb energy. It's not going to be right because bond formation is actually the releasing of energy. The product process less energy. It is not. The total energy change in the bond formation is less than that of bond breaking. Is that clear, every one of you? Is that Yes, clear, sir. everyone? So these Yes. are 35 MCQs and prepare yourself for the test, which is tomorrow, right? Energetics का test होगा कल आप लोगों का, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए. सारे MCQs है, सारे क्वेश्चन आंसर्स अपने पास रेडी रखिए. कल इंशाल्लाह आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा. Is that clear, every one of you? Yes. Yes, sir. And inshallah on Wednesday we will talk about the past papers of electrolysis. फिर हमारा सारा electrolysis, energetics सब end हो जाएगा.